my truth and that of people in the country who had witnessed injustices for decades. And that's the reason why I got into journalism. After a couple of initial forays in television, I joined this publication called Tehelka, where my investigation then sent the first serving Home Minister of State behind bars for extrajudicial murder of Muslims. That man now happens to be the second most important man in India. His name is Amit Shah. He's the Home Minister of the country. That I would be detained at the airport. And it was quite a struggle. I had to go to the Delhi High Court to get permission to fly out of the country as if I was some kind of a fugitive. And then when I reached the airport for the second time, I was detained again despite a court order. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। नाम है राना अय्यूब। हिंदुस्तान की बहादुर, ताकतवर, अजीम और ईमानदार सहाफ़ियों की अगर फहरिस्त बनाई जाएगी तो उसमें मेरे ख़्याल में सबसे पहला नाम इसी राना अय्यूब का आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा सच्चाई से काम लिया है और ऐसी सच्चाई तहरीर की है कि कई सारे मीडिया हाउसेस ने उसे छापने से भी इनकार कर दिया। राना अय्यूब से जुड़ी कई सारी स्टोरीज़ है, कई सारी बातें हैं, कैसे उन्होंने इतना नाम हासिल किया, कैसे उन्होंने कमाल किया और क्या कुछ हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है और किस तरह किस वजह से दुनिया भर में राना अय्यूब को एक नाम और शोहरत हासिल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इटली में होने वाले इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल में उनकी शिरकत के ताल्लुक़ से, वहाँ उनके दिए गए इंटरव्यू और उनकी स्पीच के ताल्लुक़ से कि क्या कुछ वहाँ उन्होंने कहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और मिल्लत टाइम्स को रमज़ानुल मुबारक में फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। एक लिंक ये भी मौजूद है जिस पर क्लिक करके आप हमारे मंथली सब्सक्राइबर बन सकते हैं। स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर भी आप मिल्लत टाइम्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ चाहे रकम भेज सकते हैं ताकि मिल्लत टाइम्स को हम अच्छी तरह जारी रख सकें। Young journalist who just 4 days ago at a Hindu rally where they were out there to cover the hate speech against Muslims, they were beaten badly, called jihadists, and the cops filed a complaint against the journalists. That's the India I'm coming from. इटली में एक मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल मीडिया के ताल्लुक़ से तकरीब और इवेंट मुनक़िद करती है और उसमें दुनिया भर के सहाफ़ियों को बुलाया जाता है। किस मुल्क में सहाफ़ियों की क्या हैसियत है, मीडिया कितना आज़ाद है, सहाफ़ियों का क्या स्टेटस है, मीडिया की क्या वैल्यू है, उस पर वहाँ गुफ्तगू की जाती है। बड़ी तादाद में स्पीकर्स मौजूद होते हैं। इस साल 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये प्रोग्राम चल रहा है और 8 अप्रैल को राना अय्यूब का प्रोग्राम था। राना अय्यूब ने वहाँ स्पीच भी दी, इंटरव्यू भी दिया और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनकी स्पीच के कुछ हिस्से वायरल भी हो रहे हैं। राना अय्यूब ने वहाँ क्या कुछ कहा है, किस तरह अपना दर्द बयान किया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। राना अय्यूब ने अपनी गुफ्तगू का इजहार इस तरह किया है कि मैं भारत से यहाँ सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं आई हूँ बल्कि एक भारतीय मुस्लिम के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ और मैं बताने जा रही हूँ कि भारत में मुसलमानों को कितनी परेशानियों का, कितनी दिक्कतों का सामना है, कितना मुसलमानों से वहाँ नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरह वहाँ सहाफ़त करना भी मुश्किल है, एक मुसलमान बनकर जीना भी मुश्किल है। राना अय्यूब ने अपने कई सारे तजुर्बात वहाँ शेयर किए जिसमें राना अय्यूब का कहना है कि 92 में जब मैं 9 साल की थी और मेरी बहन 15 साल की थी, कुछ फसादी, कुछ दंगाई मेरे घर में घुस आए, वो हमें रेफ्यूजी कह रहे थे, मुसलमान कह रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद राना अय्यूब ने अपना एक और वाक़या शेयर किया कि वो एक कैफ़े में बैठी हुई थी जहां अल जज़ीरा के लिए उनका इंटरव्यू चल रहा था। उसी दौरान उनके बीजेपी के कॉलीग है, उन्होंने फ़ोन किया और कहा राना अय्यूब मैंने तुम्हें एक इंटरव्यू भेजा है, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, ये देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राना अय्यूब कहती है कि मैंने उस वीडियो को देखा तो पोर्न वीडियो थी जिसमें एडिटिंग करके फोटोशॉप के ज़रिए मेरी तस्वीर लगा दी गई थी। उसके अलावा भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है जहां मुझे रेप करने की धमकी दी गई, मेरे ताल्लुक़ से कई तरह के इमोजीज़ इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और दीगर जगहों पर, जहां मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट का मुझे सामना करना पड़ता है। आप सुनिए राना अय्यूब का दर्द क्या कहा उन्होंने। This is not the first time it's happened with me. In 2018, I was sitting with a colleague of mine at a cafe and I was recording this interview for Al Jazeera, and a member of the BJP, which is a ruling party,
who's also a source of mine, he sends me a WhatsApp saying, he said, Rana, I know we can be ideologically on two different sides, but what is happening here is not acceptable. I said, what happened? He said, okay, I'm going to send you a video. Please don't react to the video. I said, okay. And the video comes to me. It's a porn video with my image morphed on it. I see the first 5 to 6 seconds. I do not have it in me to watch the full video. And it's coming, he said, it's circulating in the WhatsApp group of the BJP leaders. And I go into the washroom and I throw up because I don't know how else to react to this. And the first thing that comes to my mind is to question my own self. Like, I'm asking my friend, do you think I'm humiliated? And my friend is like, you're a feminist, you're not supposed to say these things. I said, yeah, but we are living in a country that's not feminist. It's rooted in patriarchy and misogyny, and people will place the burden of proof on me. Where I feel, and I came back to my table, and I opened my phone. It was full of screenshots and screen grabs from the disgusting video, where people were asking me for my rate, and that screenshot was all over on social media, on my Instagram, on my Twitter, on my Facebook. It was trending. And I felt, and that's a wrong word to use. At that point of time, also I tried to rationalize with myself that I shouldn't use the word humiliate, but honestly, you do feel ashamed for something that's not your fault, but you do feel like you have been let loose for a lynch mob out there. And it's a very real threat in the Indian context. Yes, this time when the money laundering allegations were made against me, I felt shamed into silence. I felt like if I go out at the airport, what are people thinking about me? People who are looking at me, are they judging me? And that's what they do. They plant the seed of self-doubt. They plant this humiliation within you, which should not be the case, but unfortunately we live in a time where this kind of half-baked WhatsApp stories are our new reality. राना अयूब ने गुजरात के ताल्लुक से भी अपना दर्द बयान किया। राना अयूब ने कहा कि मैं तहलका मैगज़ीन में काम कर रही थी, उसके बाद मैं गुजरात गई और गुजरात में साल 2002 में जो मुसलमानों का कत्ल हुआ था, जो फसाद हुआ था, उसकी मैं इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही थी, सच्चाई दुनिया को बताना चाह रही थी। चुनांचे मैंने अपना नाम बदला, अपनी शनाख्त बदली, एक अमरीकी नाम फ़र्ज़ी तौर पर मैंने अपना चूज़ किया, अमरीकी बोलने का लबो लहजा मैंने अपनाया, ख़ुद को अमरीकी जर्नलिस्ट के अमरीकी शहरी के तौर पर मैंने वहाँ पेश किया। मेरे जिस्म पर कुल 8 कैमरे लगे हुए थे और इस तरह अमरीकी जो गुजरात में जो पुलिस थी, जो दूसरे अफसरान थे, सबसे मैंने बातचीत की। गुजरात में जो दंगा हुआ था 2002 में, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। तकरीबन 8 महीने लगातार मेहनत करके मैंने पूरे गुजरात की सच्चाई जानने की कोशिश की। गुजरात में क्या हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बावजूद मैंने सब कुछ कर लिया। और जब सब कुछ करने के बाद मैंने वो स्टोरी तैयार करके तहलका मैगज़ीन को शाये करने के लिए दिया, तो तहलका मैगज़ीन ने उसे शाये करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दबाव था नरेंद्र मोदी का, गुजरात के चीफ मिनिस्टर का। राना अयूब ने अपना दर्द ये भी बयान किया कि उसके बाद मुझे किसी भी मैगज़ीन ने जॉब देने से इनकार कर दिया। कहा आपको यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। हालांकि उससे पहले सब मुझसे ताल्लुक़ करते थे, सब मुझे ऑफ़र करते थे, लेकिन दबाव में, प्रेशर में 2014 के बाद मीडिया हाउसेज़ ने मुझे अपने यहाँ काम कराना बंद कर दिया और अब मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। राना अयूब ने अपना दर्द ये भी बयान किया कि जो मेरे दोस्त अहबाब मुझसे पहले कैफ़े में मिलते थे, बाहर मिल जाते थे, अब वो मुझे खुली जगहों पर मिलना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि घर में मिले, क्योंकि उनका कहना होता है कि कोई देख न ले, तुमसे मुलाकात करते हुए किसी की नज़र न पड़ जाए और फिर मुझे परेशानियों का सामना करना पड़े। आप सुन सकते हैं राना अयूब का ये दर्द भी, जो गुजरात फाइल के ताल्लुक से उन्होंने कहा है। When I was 9, the anti-Muslim riots broke out in Bombay, and me and my sister, I was 9 and my sister was 15, a mob was getting to our house to pick us up for a gang rape, and we were saved in the nick of time by a Sikh man. And that's the first time when I was 9 that I heard the word refugee and a Muslim being used explicitly for me. So I have been made aware of my religious identity at a very early stage in my life. And then 10 years later, when I was 19, I was in this state called Gujarat, which was then presided over by
who's now the Indian Prime Minister, Narendra Modi. He was then the Chief Minister when 1,000 Muslims were butchered in a span of 3 days under his watch. And I went there as a relief work. I was only 19, and that's when I decided I had to do something because I had to stop feeling helpless. And that was an overwhelming feeling. You know, when you are a kid with a handicap, there's so much of sympathy that comes your way. I wanted to get rid of that sympathy, and I wanted to speak my truth and that of people in the country who had witnessed injustices for decades. And that's the reason why I got into journalism. After a couple of initial forays in television, I joined this publication called Tehelka, where my investigation then sent the first serving Home Minister of State behind bars for extrajudicial murder of Muslims. That man now happens to be the second most important man in India. His name is Amit Shah. He's the Home Minister of the country. So after I did the investigation, I went undercover. I went undercover as this Hindu American girl with a fake name, a fake identity, and a fake American accent with 8 cameras on my body. And this was in 2010. I infiltrated the rank and file of Mr. Modi's government. For 8 months, I did a sting operation on all the top guys in the Modi administration, where they spoke the truth of the genocide of Muslims and the extrajudicial murder of Muslims. When I came back to my organization, they refused to publish the story, citing political pressure. I was only 26 then. It was a lot for a journalist to take to put her life in jeopardy and for her investigation to not be published. I went through a lot, including a nervous breakdown, and that's when I started seeing a psychiatrist. And of course, I'm reliving those days back again. बहरहाल राना अयूब ने गुजरात में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। जब तहलका ने उनकी रिपोर्ट को शाये करने से इनकार कर दिया तो राना अयूब ने लोन पर पैसा लिया और किताब छापी और उस बुक का नाम रखा गुजरात फाइल। राना अयूब का कहना है कि मेरी इस किताब को मीडिया में कोई जगह नहीं दी गई, मीडिया में पब्लिसिटी नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए इस किताब को शोहरत मिली। दुनिया भर में इस किताब का चर्चा हुआ और कई जगहों पर इस किताब की वजह से अवार्ड भी दिया गया। राना अयूब की किताब गुजरात फाइल उर्दू ज़ुबान में भी दस्तयाब है और इस किताब में पूरा बताया गया है कि गुजरात में 2002 में कैसे और किस तरह फसाद हुआ था। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि कहा जाता है कि राना अयूब की रिपोर्ट ही की वजह से साल 2010 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और इस वक्त देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह को कुछ महीनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। वो राना अयूब की रिपोर्ट ही थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल जाना पड़ा। अब सुनिए राना अयूब का दर्द किस तरह उन्होंने बयान किया है। But I went to every journalism organization back in the day, and they refused to publish. And then I went to publishers saying, "Can you publish the transcript of the tape of my sting operation?" And they said, "It's too risky a book." So my mom had some gold kept for me, like back in India, it's a tradition that when you're about to get married, the family gives gold. So she has kept some gold for my marriage. So I pawned the gold. I took a gold loan and self-published my book, which was called Gujarat Files: Anatomy of a Cover-Up. There was no media coverage, but social media, which can also act as, has been weaponized against us, also has kind of democratized the space for us to speak. It became a great platform for my book to be an international bestseller, selling 750,000 copies in 14 languages. But the courts in India have still not taken or asked me for my tapes as investigation. After Mr. Modi came to power, I have literally been an independent freelance journalist because editors who wanted to offer me a job in their publications before 2014 pretended I do not exist. Friends who would meet me for coffee in cafeteria would prefer meeting me home because they did not want to be seen with me in public. Why is that? Because I chose to tell a truth without sugarcoating it and the way it should be, unlike what you see of well-meaning people these days who refuse to call fascists by their name, who refuse to call dictators by their name, who refuse to call demagogues by their name. That's what I'm trying to do, and that's what many unsung journalists in India are trying to do right now in the face of
everyday persecution of the Indian minority, which is about 220 million, the third largest population of Muslims in the world, where the Prime Minister of India himself issues dog whistle against the Muslim community. Yesterday, a Hindu priest in front of a massive crowd asked the crowd to rape and abduct Muslim women, and cops were present and they didn't do a thing. This is everyday life for each one of us. One of the reasons why the Prime Minister of India and his agencies did not want me to board the aircraft is because I am one of those journalists, amongst many other journalists, who are speaking this raw truth that the world needs to know. राना अयूब ने यह भी कहा कि 30 मार्च को मुझे हिंदुस्तान से निकलना था, कनाडा के प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, लेकिन 30 मार्च को ही राना अयूब को ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया, उन्हें समन भेज दिया और कहा अब बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद राना अयूब ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जहां से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिली और इटली के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है। राना अयूब का कहना है कि अफसरान ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, जांच के दौरान मेरे साथ सलीके से बातचीत नहीं की, मेरे $3 का भी उन्होंने हिसाब लिया जिससे मैंने फूड ख़रीदा था खाने के लिए। राना अयूब का कहना है मैं रोज़े से थी और मैंने पानी मांगा कि तुम मुझे पानी दो, मुझे अपना रोज़ा खोलना है, वो भी देने से इनकार कर दिया और कहा अभी रुकिए, अभी कुछ प्रोटोकॉल है जिसको पूरा करना पड़ेगा, अभी आपको हम ये चीज़ें नहीं दे सकते हैं। राना अयूब का कहना है कि हिंदुस्तान में सहाफ़ियों को और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना है। हिंदुस्तान में जिस तरह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों पर तशद्दुद किए जा रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग करना, उसको दुनिया के सामने लाना सहाफ़ियों के लिए आसान नहीं है, मुश्किल हो गया है। कोई सहाफ़ी उसकी हिम्मत भी नहीं कर रहा है। अगर कोई सहाफ़ी उसकी हिम्मत करता है, कोशिश करता है, तो उसको भी अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। राना अयूब ने इस तरह के कई सारे मसाइल का तज़किरा किया है। इसके अलावा पिछले दिनों हिंदू महापंचायत में कुछ मुस्लिम जर्नलिस्टों को, उसके अलावा कुछ दूसरे सहाफ़ियों को जब पीटा गया मुसलमान होने की वजह से, जिसमें मीर फैसल भी शामिल है, उन सब वाक़े का भी राना अयूब ने अपनी स्पीच में तज़किरा किया और कहा कि कुछ मुस्लिम पत्रकारों को हिंदू महापंचायत में दिल्ली में इसलिए भीड़ ने मारा क्योंकि वो मुसलमान थे, यानी मुसलमान होने की वजह से, मुसलमान जर्नलिस्ट होने की वजह से भी वहाँ मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है। राना अयूब ने अपने इंटरव्यू में यह भी दर्द बयान किया है कि जब 30 मार्च को ईडी ने मुझे रोक लिया, मुझे बाहर जाने से रोक दिया गया, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरी हिमायत में एक लफ्ज़ नहीं कहा, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं कहा, किसी ने मजम्मत नहीं की। मेरे अपने पैसे हैं और मुझे उसी पैसे का मुझसे खर्च मांगा गया, मुझ पर फ्रॉडी होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि सारा का सारा झूठ था। रिपब्लिक, जी न्यूज़ जैसे चैनलों ने, बल्कि कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी राना अयूब के ताल्लुक़ से घटिया रिपोर्टिंग की। इन सब का भी राना अयूब ने अपनी वहाँ की स्पीच में तज़किरा किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं राना अयूब की स्पीच में। मुकम्मल वीडियो आप इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल पर या ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। मिलत टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर भी उनकी वीडियो का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट शेयर किया गया है, कुछ क्लिप्स आप वहां भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि नेमत खाना प्रोजेक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने शुरू किया है, जिनका मकसद है ख़वातीन को और ख़ास तौर पर बेवा औरतों को रोज़गार फराहम करना। इसके अलावा उसके ज़रिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें इफ्तार पहुंचाना। इसके लिए नेमत खाना प्रोजेक्ट अपना काम कर रहा है। एक बेहतर काम है जिसका मिलत टाइम्स को सपोर्ट हासिल है। इफ्तार के एक पैकेट की कीमत सिर्फ 95 रुपये है। आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। एक सदक़ा जारिया है, नेक काम है। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com